Hello and a very good evening. That's the patent way to start our live broadcast. But is it unfortunate for me, or is it just the circumstances that we are all dealing with that very often than ever I do have to ask this question, is it actually a good evening? Is this actually a good evening for India? I'll come to the point in 20 seconds. If I ask you, what have you been doing for the past 290 days? 290 days, that's right. What have you done in the past 290 days? You must have celebrated Diwali. You must have celebrated New Year's. You must have celebrated Christmas. You also must have erupted in joy watching India win 10 matches in the row for World Cup. Yes, the loss in the finals was disappointing. All that has happened in the past 290 days. Some of you must have celebrated your birthday as well. Some of you must have gotten hitched. Fantastic. Because these are all signs of life and happy lives. These are all signs that prove that we have life left in us. But you know, there is a part of our country, that part of this country, the same country, for the past same 290 days had been dealing with violence, violence and violence alone. For the past 290 days, Manipur had been crying for help. 290 days, which is 75 away from the cycle of a year. What started on 3rd of May 2023 has not ended. And 290 days later, we are once again back discussing Manipur. And make no mistake, the past 290 days had not been a silent one. It has been only and only violent. Maybe the frequency had gone down, the intensity had gone down, but you can't call it normalcy, for heaven's sake. Yesterday, which is Thursday evening, massive violence broke out at Churachandpur. Churachandpur in Manipur state. Massive violence broke out. According to Manipur police, a mob roughly about 300 to 400 had thronged into a government compound which housed the office of SP, that's Superintendent of Police, and other government headquarters. And the mob was violent. Government properties were ransacked, vandalized. SP's office was set ablaze. DC's residence was set ablaze. Vehicles after vehicles were set ablaze. More help was called in from Rapid Action Force. And then police had to also resort to firing. And 2 people lost their lives, while scores are still there in the hospital battling for their lives. One evening, one Thursday evening at Churachandpur in Manipur. The same Thursday evening, you possibly had enjoyed your fine dine with your family, and that same Thursday evening, 2 families have lost their loved ones. The DC's residence was absolutely set ablaze, and all this because of one viral video. All this because of one viral video. And that one viral video had Head Constable
under Manipur police, filming himself in a situation where he could also be seen with other people holding arms, and they are known as village volunteers. After that video went viral, he was suspended, and in protest of that suspension, because he belonged to one community, so the community feeling had overpowered every other logic. Violence happened because people protested. What's the end result? Two families have lost their loved ones. Many people are still battling for their lives. And the scars of violence for many would remain forever. And make no mistake, it is not exclusive to Churachandpur. What happened yesterday happened in Churachandpur, but then in January itself, there had been multiple incidents of violence. For example, last Tuesday in Imphal East, there had been two separate incidents. In one incident, 2 people died. In another incident, where people tried to storm into a police training camp with the idea to loot arms and ammunitions, firing happened. Fierce gunfights continued on Thursday in Sugnu, where Imphal East meets with the hills of Naga-dominated Chandel district. People are dying almost every week. And there had been a spate in the violence of late, which you have noticed in More as well. And all this after there had been some major announcements. The Union Home Ministry said the entire stretch of the border between India and Myanmar would be fenced. The Home Minister's order had also stoked in a lot of debate, because Manipur shares a substantial amount of that border, and that border is considered to be porous. And now almost 290 days into the violence, the State Chief Minister says that the border had been at the heart of all the trouble and illegal infiltration had been happening, and thus illegal infiltration had to be stopped. And he also passed on this order that whoever has come to Manipur after 1961, they would be considered as intruders and they would be deported. Why am I saying this? Because yesterday in Churachandpur, the violence that happened inside the government compound, which also housed the office of DC and SP, after the violence ended and after the buildings were doused, people found a lot of documents scattered everywhere. Now, we are not trying to suggest that those documents are related to the identities of people. No, we are not trying to suggest that. But what we are trying to say is, after that video came to the fore, that also triggered another panic among people, where the documents related to the identities of people have been either damaged or burned, or if they have been done intentionally. Please understand, we are talking about a state which is completely divided, and you can hate me for saying this, but that is the hard fact. There are people who keep shouting hard facts, hard facts, hard facts. They are the same people who have stayed quiet, silent all along about Manipur. And the hard fact of the day is the silence of the nation has cost Manipur quite dearly. In this broadcast, I am also joined by Yakut Ali, renowned journalist, independent journalist, working with The Wire. And the reason I've connected with Mr. Yakut Ali is because he has covered Manipur extensively. And it is so easy to find
in this country of 1.4 billion people, whose custodians are those people who come on TV every day shouting for the rights of the people. In the same country, it was so easy to find out Yakut Ali as an easy choice because not many people, as journalists, have gone to Manipur to cover the ground situation. Yakut did. And thus, he is here on this broadcast with me. Yakut, thank you so much for your time. I really Hi, appreciate your time. thank you for inviting me here. Hi. Well, Yakut, I know I need to connect you over the phone for the audio. Just give me 10 seconds. So basically, Yakut had been working with the wire, and he had gone to Manipur. Spent substantial amount of time, been to all sides, and the reason why he knows uh, two sides of the story. I could have connected to reporters from Manipur, and I wish I could, but sadly, it it is divided a place now. And even if you have a neutral journalist from Manipur, the apprehension, the doubts would always overburden the conversation. That's why, Yakut, we want to have a safe discussion here. Hi. 290 days, Yakut, Hmm. 290 days. Yeah. The violence had been on in Manipur for the past 290 days, और कल जो चूराचांदपुर में घटना घटी है, Hmm. अ, वो तस्वीरें चौंकाने वाली है. जी. डीसी के ऑफिस में घर पे आग लगाया गया, एसपी के ऑफिस में आग लगाया गया, और इसका शुरुआत, उनका कहना है, उनका ट्रिगर मानना है कि इसके पीछे एक वायरल वीडियो है. मणिपुर की आज की जो परिस्थिति है, जैसे एक चुटकी में आग लगना और आग फैलने का संभावना आज भी मौजूद है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस? देखो तमल, इसके मतलब अभी से इसको नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 75,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं और अभी आज चूराचांदपुर है, कल हम यही घटना इम्फाल से सुन लेंगे, इसी तरीके की घटना। और जो 2 कम्युनिटी की जो लड़ाई थी, वो अब इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब जो इलाके, जैसे कि आप देखते हैं कि हम चूराचांदपुर जाते हैं या फिर इम्फाल आते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरे कंट्री के बॉर्डर में जा रहे हैं, तमाम तरीके की सिक्योरिटी और फिर वहाँ पे तमाम ऑफिसर्स होते हैं जो साइन करवाते हैं। और लेकिन अब ये जो घटना सामने आ रही है कि चूराचांदपुर में जो डीसी के ऑफिस पे ये जो हमें घटना सुनी और वहीं के लोगों के बीच से जो घटना बाहर आ रही है, इससे पहले हम ये इम्फाल में भी सुन चुके हैं। और जिस तरीके से ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, सॉल्यूशन तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को महीनों हो चुके हैं, जून में उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जितने भी तमाम वादे किए थे, उनमें से हार्डली 1 या 2 ही वादे पूरे हो पाए होंगे। और उन्होंने वापस जाने का भी एक वादा किया था कि मैं एक बार फिर 15 दिन बाद इम्फाल लौटूँगा। करीब उनको गए हुए महीनों बीत गए हैं, लेकिन गृह मंत्री हमें वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आसाम जाते हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ नहीं जाते हैं। तो जब उनके वहाँ के चीफ मिनिस्टर से लोग बात करने को तैयार नहीं हैं, जब लोग उनसे डिसअपॉइंटेड हैं, लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या सॉल्यूशन है? सेंटर को तो बीच में बोलना ही पड़ेगा। सेंटर के लोग कोई हमें बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट में एक लाइन में ट्वीट करके यहाँ से बात कह दी जाती है और उसको फिर आगे प्रोसेस कर लिया जाता है। जो लोगों की नाराज़गी है, वो अभी भी स्टेट से है। अगर सेंटर बात करने की कोशिश करे, ख़ासतौर पर जब वहाँ पे लोगों से बात करो, तो लोग कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री से बात करनी है, हमें सेंटर से अभी भी उम्मीद है। जी। अब याकूब, एक चीज जो मुझे समझ में आया है कि एक जियोपॉलिटिकल मामला इसमें इन्वॉल्व है, जी। और हम जर्नलिस्ट इसको जरूर जानते हैं और उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं. कुछ चीजें हैं जो हम लोग भी पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन
लोगों तक एक पीस का अपील, क्या वो भी जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल हैंडलिंग के सामने आ सकता है? बिकॉज चुराचांदपुर में कल रात को ये घटना घटी है और 24 घटना होने को आया, 24 घंटे ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, किसी से कोई स्टेटमेंट है? क्या इंसान की जिंदगी जियोपॉलिटिक्स से उसका कीमत कम है? ये जो ये जो घटना घटी है, इसके बाद प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आना तो मतलब मुझे नहीं लगता उनके लिए ये घटना शायद बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि जब आपको अगर याद हो तो जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कितने सेकंड्स के लिए प्रधानमंत्री ने उस पर बात की थी? 30 सेकंड। तो शायद उनके लिए ये तो बहुत छोटी बात होगी, तो इसलिए शायद अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अब मुझे तो ये देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कुछ महीने में चुनाव होंगे तब क्या प्रधानमंत्री तब भी मणिपुर नहीं जाएँगे? ये भी देखना होगा। लेकिन ये जो हालात अभी मणिपुर में है, जी, दोनों दोनों तरफ में एक गुस्सा है और दोनों तरफ में एक आक्रोश भी है। जी, आप इम्फाल का देख लीजिए। इम्फाल में पुलिस ट्रेनिंग कैंप में आर्म्स लूट करने का एक प्रयास किया गया और ये पहली दफा है नहीं। जी, अभी तक मालूम नहीं है कि दूसरी तरफ ये जो आर्म्स का सप्लाई हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिकॉज अगर आप याद करें याकूब, जब नो कॉन्फिडेंस डिबेट में गृह मंत्री यानी अमित शाह ने अगस्त में हाउस में रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा था कि इस महिलाओं के वीडियो के ऊपर उनके पास कोई इंटेलिजेंस था नहीं। 290 डेज, 290 दिन, आज भी देश के पास इंटेलिजेंस नहीं है। कहां से आ रहा है ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस? और अगर इंटेलिजेंस है तो हमने किया क्या है उसको रोकने के लिए? जी। आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अभी जो मरने वालों की संख्या है, उसमें आप देखेंगे तो पुलिस के जवान भी मरे हैं और अ, आर्मी के लोगों की भी जान गई है ना? और दूसरी बात जो असेंबली होती है, असेंबली में दूसरी तरफ के जो हिल के एरिया के लोग हैं, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है, फिर वो नाराज़गी बताते हैं। वो कई बार दिल्ली आकर चले जाते हैं, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, उनको टाइम नहीं दिया जाता। फिर एक जो तबका है, उसमें ये तो नाराज़गी आएगी ही कि अगर हम टाइम माँग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, तो हमें टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है ना? और अभी जो हाल ही में 5वीं जो मुलाकात हुई थी गृह मंत्री के साथ, उस मुलाकात में एक इश्यू ये भी उठाया गया था, जो कुकी समुदाय के लोग हैं, उनका ये कहना था कि ये जो बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही है, ये ना की जाए। उसके पीछे का वो कारण देते हैं कि हम जो ये तो बॉर्डर हिंदुस्तान का और जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उनका बनाया हुआ है, लेकिन जो हमारी जो एथनिसिटी है, वो हम तमाम इलाकों में शेयर करते हैं। वो बर्मा में, म्यांमार में भी वो जाते हैं और कुछ-कुछ तो उन्होंने ऐसी भी बातें बताई मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी का घर अगर मणिपुर में है तो हो सकता है कि उसकी शादी बर्मा में हुई हो, किसी की ज़मीन हो सकता है कि इधर भी हो और उधर भी हो, किसी का घर हो सकता है कि एकदम बॉर्डर पे हो। तो वो सवाल कर रहे थे तो क्या बॉर्डर को भी किसी के घर को भी बीच से फेंस कर दिया जाएगा? इस तरीके के उनके जेन्युइन लेकिन सवाल। ये सवाल जेन्युइन है कि नहीं, उस पर भी मेरा सवाल है। अगर जी, ऐसी सोच विचार हम लोग रखते याकूब, मैं कोलकाता से हूँ, पश्चिम बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है बांग्लादेश। अगर यही सोच हम लोग रखते तो इंडिया और बांग्लादेश का भी कभी बॉर्डर नहीं हो सकता था। बिकॉज बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कल्चरली, लैंग्वेज वाइज एंड हिस्ट्री वाइज they are connected. हुँ, You have families settled in India, settled in Calcutta, settled in West Bengal, who have their antecedents in Bangladesh.
मैं अगर आपको बताऊं, मालदा या फिर अ, मालदा बॉर्डर जो है, मालदा में जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, पूरा बार्ब्ड वायर्स है। और बार्ब्ड वायर्स ऐसे भी हुआ है कि किसी के घर के बीच से गया है। अभी उस तरफ जो घर का हिस्सा है वो इंडियन का है, लेकिन बांग्लादेश में चला गया है। अभी इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनको रीसेटल किया गया, जी। परिवार को उस जगह से रिहैबिलिटेट करके रीसेटल किया गया। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है कि हमारे फैमिलीज का एक कनेक्शन है, एथनिसिटी कनेक्शन है, लैंग्वेज का कनेक्शन है, ये कंसर्न्स अगर इंडिया की इंटीग्रिटी के, जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी के सामने आ जाए, तो आप किसको चुनेंगे? देश की सुरक्षा, देश की इंटेग्रिटी, या फिर खुद की अपनी इच्छा? ऑब्वियसली इसमें देश की सुरक्षा को ही चुना जाएगा, लेकिन उनके लिए सॉल्यूशन क्या है? उनको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना होगा, आखिर वो भी तो हिंदुस्तान के ही लोग हैं। एग्जैक्टली याकूब, मैं सुनना चाहता था। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो आपसे एक दिन पहले आपके दफ्तर में आते हैं, आपसे मिलके जाते हैं और आपसे यही डिमांड रख कर जाते हैं, और उसके अगले दिन आप ट्वीट कर देते हैं और उनको सीधा एक तरीके से उनको ये एहसास कराया जाता है कि भाई आपको मिलना है और हमने आपकी बात नहीं की और वी डोंट केयर। ये इस तरीके से जो मैसेज दिया गया है, ये एक मैसेज जा रहा है एक तरफ के जो पूरा समुदाय है, जो पूरा हिल में रह रहा है, वो इनको आगे जाकर प्रॉब्लम होगी। चाहे अगर वो आज इसे इग्नोर करें, लेकिन आगे आगे फिर क्या करेंगे? जब इस तरीके से झगड़ा बढ़ेगा, वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर केंद्र सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगा, तो हो सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। कि जब बातचीत हो रही है, बातचीत के अगले दिन ही इस तरीके से वो भी ट्विटर के माध्यम से जवाब आ जाना, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। हो सकता है कि बातचीत के बाद एक और बातचीत होती। हो सकता है कि अगर बातचीत में उनसे इस बात को रखा गया होता, तो उनको कोई सॉल्यूशन बताया जाना चाहिए था कि हम इस तरीके से करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। एब्सोल्युटली याकूब, आपने एक इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया और जो मैं सुनना चाहता था, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। डिड द गवर्नमेंट ऑफ द डे डू इनफ टू टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस? बिकॉज दो अनाउंसमेंट बहुत क्विक सक्सेशन में हुआ। पहला अनाउंसमेंट के इंडिया और म्यांमार के भीतर जो जो बॉर्डर है, जो जो बॉर्डर है, उसको उसको पूरा फिजिकली फेंसिंग किया जाएगा। देयर वुड बी फिजिकल फेंसिंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। And there was another announcement by the chief minister that those who have come after 1961, they would be deported. They would be considered as illegal immigrant और उनको हटाया जाएगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा। जी। तो ये दो जो अनाउंसमेंट किए गए, ये अनाउंसमेंट करने से पहले सोच विचार तो जरूर हुआ होगा, लेकिन क्या सरकार ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस याकूब? नहीं, सरकार तो अगर लोगों तक पहुँचना चाहती तो अभी आप ही बोल रहे थे 290 दिन हो चुके हैं। तो अगर सरकार चाहती तो अभी तक इतने लोगों की जान ही नहीं गई होती। सरकार चाहती तो ये जो तमाम हम देखते हैं कि कांगपोक की हमें जाना हो तो एकदम बॉर्डर की तरह एंट्री लेनी पड़ती है, चूड़ा-चाँदपुर के लिए भी ये हमें करना पड़ता है। अगर सरकार चाहती तो सरकार को ये क्या दिख नहीं रहा है? सरकार की नज़र में तो सभी है। और सरकार चाहती तो शायद ये झगड़ा ही नहीं होता। यही सवाल है मतलब। सरकार चाहती तो ये जो स्टूडेंट्स का जो इश्यू है, जो बच्चे एजुकेशन के लिए इंटरनेट की डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे, जो आए दिन अक्सर अभी हम सुन रहे हैं चूड़ा-चाँदपुर में फिर से 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। एब्सोल्युटली, सच आखिर है। कितना बड़ा जाएगा, वो हमें नहीं पता है। हो सकता है 5 दिन के 30 दिन हो जाएँ। लेकिन अगर सरकार चाहे तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन नहीं लगेगा। जिस तरीके की ये सरकार है, जिस तरीके से इस सरकार के लोग डिसीज़न ले लेते हैं रातों-रात। याकूब, मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा।
I want to play a video. जी If I can tell my producer, the video from January 17, the More video, if that is ready, I want to play that video full frame and also with audio. And also with audio. Please listen to the audio carefully. हेलो Sir, we are having a total plus 10, sir. Total 37 Marcus Tabri, sir. Sleeper Romeo 153337 की तफरी और कम से कम 15 है वहाँ पे और ज्यादा है 15 नहीं 20-25 आदमी है ऊपर भी है 30 आदमी स्लीपर रोमियो 1515 मैसेज और आप लोग गाड़ी के ऊपर फायर मत करो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा हम आप लोगों को कुछ करने नहीं आए इधर अगर गाड़ी में Tell them pardon, otherwise, what is happening? Why they are firing? Why they are firing? No, I will not go. अनाउंस करना अनाउंस करना हम लोग रुक ऑर्डर मिलेगा फिर कोई क्या बोलता नहीं जी ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं मैं समझ गया मैंने इस तरीके की तमाम वीडियोस देखी हैं जिसमें जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको या तो उनकी जगह से उनको जाने को कह दिया जाता है या फिर उनके ट्रक को बोल दिया जाता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो विल शूट यू आप ये इसी तरीके की वीडियो पे कोई सवाल करना चाह रहे हैं जी बोलिए नहीं, Yakub, I actually wanted to give a context to this video and also for my viewers. This video was shot on 17th of January. The area is somewhere near More, somewhere in More district. And army in their Casper vehicle was going towards the spot where Manipur police had come under attack. So Manipur police, they were trapped. They had sent a SOS, come rescue us. And army had to go there in that Casper. Eventually, army could rescue the Manipur police personnel who were trapped. But there is a different reason why I showed this video. If you have watched the video carefully, have you noticed the brazenness in the eyes of those young people holding arms? Have you seen the brazenness? क्या कहेंगे इसको? आप अगर सरकार को ये सवाल पूछा जाए कि कोई भी इलीगल आर्म को हाथ में उठा के चले तो आप उसको मिलिटेंट कहेंगे, आप इन बच्चों को मिलिटेंट कहेंगे? और अगर दूसरा सवाल आपको पूछा जाए इनको मिलिटेंट बनने में मजबूर किसने किया, आपके पास जवाब है क्योंकि आपने इतनी देर चुप्पी बरकरार रखा, सवाल आना लाजमी है. You have not given any explanation to the country as where are these arms coming from and how are they landing in the hands of these young people. And these young people are so emboldened today that they are literally aiming at the army. डर नहीं है इनके मन में. And that worries me. Yes, yeah. जी एक सवाल यहाँ से ये भी उठेगा जो आप बोल रहे हैं ये जो आर्म्स कहाँ से आ रहे हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है लेकिन सबूत ना होने के वजह से हम ये चीज़ बोल नहीं सकते. लेकिन अगर ये जो सवाल उठाते हैं मैं अगर कहूँ मैतेई कम्युनिटी के लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि म्यांमार से ये जो आर्म्स आ रहे हैं तमाम लोग मुझे ग्राउंड पे मिले जिन्होंने इस तरीके के सवाल उठाए. तो अगर कोई म्यांमार से आर्म्स को लेकर आ रहा है तो ये भी तो सरकार का ऊपर सवाल खड़े करता है ना कि किस तरीके से वहाँ से इतना आसानी से आर्म्स आ रहे हैं. जी और दूसरा एक दहशत की तस्वीर याकूब, दूसरा एक दहशत की तस्वीर जो कल रात की है. आई वॉन्ट टू प्ले दैट वीडियो फुल फ्रेम विथ ऑडियो. इंडिया को सुनना चाहिए. इंडिया मस्ट वॉच दिस वीडियो, लिसन टू दिस वीडियो. You are so living in this entire idea of going viral every now and then. If you share that video now, you will go viral. Because that video itself is unbelievable.
that video which I had received, which I have now reduced and cut to sub 30 seconds, that video was about 4 minutes long. And for 4 minutes, not for a single second, the sound of gun firing had stopped. That was the intensity of firing last night here in Churachandpur. Please play that video full frame and with audio. What is the first reaction of yours, Yakub? See, for me, it's quite normal for seeing something from Manipur, right? क्योंकि हम जाते हैं और कहीं भी अगर हम मणिपुर में अगर एक रात बिता ले, कोई भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का एक इंसान, वो शायद मणिपुर में दोबारा नहीं जाएगा, मैं ये कहूँगा। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो सरकार जो बाकी जो तमाम नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है मणिपुर में। ये मैं ऐसा इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता तो शायद लोग मणिपुर की खबर भी पढ़ते। मणिपुर की खबर करते तो लोग सरकार से सवाल उठाते। सरकार से सवाल उठाते और सरकार से जवाब माँगते तो शायद सरकार इस मुद्दे को इतना लंबा नहीं चलने देती जितना अभी चल रहा है। सवाल पूछेगा कौन याकूब? मीडिया ने सवाल पूछा कब? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, कोट अनकोट मेन स्ट्रीम मीडिया जो देश की कस्टोडियन होने का दावा करते हैं, लास्ट कब मणिपुर पे सवाल पूछा उन्होंने? जब वो 2 महिलाओं की वीडियो सामने आया और देश में चारों तरफ छीछी हो रहा था, तब जाके 1-2 डिबेट्स हुए। और आप सोच लीजिए, अगर यही चीज मणिपुर ना होके पश्चिम बंगाल होता, ये मणिपुर ना होके अगर कर्नाटका होता, ये मणिपुर ना होके अगर तेलंगाना होता, तो सोचिए देश का माहौल कैसे होता, मीडिया में माहौल कैसे होता। सवाल पूछा कब है सरकार से कोई? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात में, क्योंकि अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी का एक ऑडियंस है, अगर वो टीवी पे तमाम इस तरीके की खबरें दिखाने लगे कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, सवाल करने लगे रात दिन, तो शायद अपने आप सरकार को उसके लिए जवाब तलाशना पड़ेगा। वो जवाब क्या है? जो माहौल है उसको सुधारना, यही एक जवाब है उनके पास। और 290 दिन हो गए हैं, ये तो पूरा 1 साल होने जा रहा है। कुछ वक्त में हम कहेंगे कि 1 साल हो गया है मणिपुर की हिंसा को। काश हमें ऐसा ना कहना पड़े, उससे पहले ही ये जो हिंसा चल रही है रुक जाए। दोनों कम्युनिटी को बीच में सरकार कोशिश करे, यही हम प्रे कर रहे हैं। हम लोग सवाल उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार बिल्कुल भी मणिपुर के जो मुद्दा है उस पर बात करने के लिए भी इंटरेस्टेड है। क्यों? सिर्फ 2 सीट है मणिपुर में इसलिए? हाँ, मुझे क्या बोल रहे हैं आप? एक बार आप रिपीट करेंगे? सिर्फ 2 सीट है मणिपुर में, 2 लोकसभा सीट है, इसीलिए? यही एक वजह हो सकती है। अगर मणिपुर की जगह ये उत्तर प्रदेश होता, है ना, तो शायद अभी सिचुएशन कुछ और होती। मणिपुर की जगह पश्चिम बंगाल होता, जहाँ पे सीट ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र होता, तो शायद सरकार ये जो अभी हमें विजुअल्स देखने मिल रहे हैं स्क्रीन पे, इसकी जगह शायद कुछ और देखने मिलता। शायद अमित शाह का बयान यहाँ पे चल रहा होता कि हमने यहाँ पर ये करा दिया है, सॉल्व करा दिया है, मामले में हमने गिरफ्तारी कर दी है, सरकार ने एक कमेटी बना दी है जो इसकी जांच करेगी। सरकार ने एक पीस कमेटी भी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। उस पीस कमेटी का क्या हुआ कोई नहीं जानता है। सरकार ने ये जो हम वीडियो प्ले कर रहे हैं इसके लिए भी एक आदेश दिए थे कि अगर कोई भी गलत वीडियो, हम तो सही प्ले कर रहे हैं, अगर वीडियो वायरल करेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी।
तमाम हम रोज़ वीडियो देखते हैं, कितनी कार्रवाई हो गई, एक भी मुझे नज़र नहीं आई है। रोज़ जो मणिपुर पुलिस की एक प्रेस रिलीज़ पढ़ते हैं, हर हफ्ते में हम पढ़ते हैं कि आज इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। कोई याकूब, सॉल्यूशन आज तक या, वो अगस्त था, अगस्त महीना था जब अमित शाह ने पार्लियामेंट के भीतर एक डेटा दिया, आंकड़ा जी, दिया कितना लोगों की मौत हुई है अभी तक। जी, उसके बाद हिंसा का घटना घटती रही, लेकिन सरकार से, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना पुलिस से कोई फ्रेश आंकड़ा मिला कि व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बिकॉज ऑफ दिस प्रोलॉन्ग्ड वायलेंस इन मणिपुर। We still don't know. I was there in Manipur. I almost frequent Manipur once every month. I try to. Because आपने जैसे कहा ना कि लोग अगर मणिपुर में आज गए तो शायद वापस जाने की इच्छा नहीं रखेंगे। मेरा दिल अटका हुआ है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के पास, और कोई सांप्रदाय के लिए नहीं, दोनों संप्रदाय के लोगों के लिए मेरे दिल अटका हुआ है उधर पे। बिकॉज मैं जब मणिपुर में गया, परिवारों से मिला, वो परिवार पीड़ित परिवार है, और पीड़ित परिवार के चेहरे में कौन से संप्रदाय से वो है वो नहीं दिखने को मिलता है। जो दिखने को मिलता है वो बेबसी, और एक राज्य बेबस है आज। और बेबसी इसीलिए, जी, सॉरी 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 याकूब, जी, बोलिए। जी, जी। मैं बस यही कह रहा था, बेबसी और एक उम्मीद, जो उनको लगता है कि शायद हम हमारे जैसे जो मीडिया के लोग जा रहे हैं, जो उनका मुद्दा दिखा रहे हैं, उससे शायद उन्हें मदद मिलेगी। इस उम्मीद से वो हमें देखते हैं, और तमाम जो वहाँ के लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा, दोनों तरफ के जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे कोई ख़राब नहीं लगा है। अगर सरकार चाहे तो आज भी एक दिन नहीं लगेगा, कमल मैं कह रहा हूँ, एक दिन नहीं लगेगा। ये जो इनकी जो नाराज़गी है, सरकार इनको टेबल पे बिठा के सॉल्व करा सकती है। आप मतलब देश का गृह मंत्री कहेगा कि आप आइए एक टेबल पे बैठिए, मुझे नहीं लगता है कोई मना कर पाएगा, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, है ना? ये है। लेकिन और हुआ नहीं अभी तक। हाँ, मुझे लग नहीं रहा है शायद इस चुनाव से पहले कुछ ऐसा कुछ होगा। हम देखते हैं कि वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का ऑफ़िस जला देते हैं, लेकिन सेंटर से फिर भी वो उम्मीद रखते हैं कि सेंटर से मदद मिलेगी। सेंटर पे उन्हें अभी भी भरोसा नज़र आता है, और स्टेट की सरकार को वो बीरेन की सरकार बोलते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बोलते हैं। यानी कि उन्हें बीजेपी से उम्मीद तो है, बात तो वो बीजेपी से ही करना चाहते हैं, लेकिन स्टेट बीजेपी से नहीं, सेंटर बीजेपी से वो बात करना चाहते हैं। और आप सोचिए, सरकार सरकार इतने महीनों से कह रहे हैं कि उनके पास, और एटलीस्ट अमित शाह जी ने जब कहा कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं था। अब आप सोचिए, आप रिलेंटलेसली कवर कर रहे हैं मणिपुर को। मैं मणिपुर से इतने सारे रिपोर्ट्स फाइल कर चुका हूं, और मैंने ये भी दिखाया कि कैसे यंग बच्चों के पास वेपन्स आ गए। द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ विलेज वॉलंटियर had almost settled as an idea of a patriotic fervor। और ये विजुअल्स हम लोग ने दिखाया, यानी ये इंटेलिजेंस है उनके पास कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हम सरकार से सवाल पूछे, आपने क्या किया इन सारे बच्चों को, जो तस्वीर आपको दिखा रहे, इन बच्चों को ये कदम उठाने से रोकने के लिए आपने क्या किया? ये सवाल अगर सरकार से पूछा जाए, याकूब, सही सवाल है या गलत सवाल है? बिल्कुल सही सवाल है। आप ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, मुझे भी एक स्टोरी याद आती है जब मैं कवर कर रहा था। मैं देख रहा था कि जो रिलीफ कैंप है, वहाँ पे जो छोटे-छोटे बच्चे 5-5 साल के बच्चे हैं, वो दीवारों पे ड्राइंग कर रहे हैं। वो क्या तस्वीर बना रहे हैं? वो वहाँ पे बंदूक की तस्वीर बना रहे हैं। तो जो बच्चा बचपन से देखेगा, वही तो वो सीखेगा, वही तो वो और कुछ मैंने देखे बच्चे जो जो टॉयज़ होते हैं, वो भी गन का लेकर वहाँ पर घूम रहे हैं। और दूसरा, अगर उनको पढ़ाई के लिए कुछ अगर सरकार मदद करती, तो शायद वो अपने स्कूल्स में जा रहे होते। लेकिन वो तो रिलीफ कैंप में एक कमरे में 10 से 15 फैमिलीज़ हम देख रहे हैं।
बिना फ़ैन के, बिना किसी फैसिलिटीज़ के। सरकार ने तो कहा था कि जितने भी लोग इस हिंसा में मारे जा रहे हैं, सबको 5 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख राज्य सरकार देगी। आखिरी जो अपडेटेड डेटा है, उसके बाद सरकार ने उसका भी कोई डेटा हमें नहीं बताया है कि कितने लोगों के पास मदद पहुँच चुकी है। सरकार ने कहा था कि उनको उनके दोबारा से उनको घर बना के दिए जाएँगे। एक इम्फाल ईस्ट में मैंने देखा था कि छोटे-छोटे घर बनाए गए, लेकिन उससे भी लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका जो वो घर जो जल गया है घर, जो वो छोड़ कर आए हैं, वो आज भी वहीं जाना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। लेकिन हम रोज़ाना इस तरीके की खबर सुनते हैं कि आज अ, इम्फाल ईस्ट के, इम्फाल वेस्ट के या कांगपोकपी के उस गाँव में आग लग गई है। वहाँ से लोग पैदल चलकर जा रहे हैं और आखिरी जो परिवार था इम्फाल में, कुकी फैमिली जो लंबू लेन में रह रही थी, उनको सरकार ही बाहर निकाल देती है कि आप यहाँ सेफ नहीं हो। बताइए आप, सरकार आपसे आकर बोले बंगाल में या फिर मुझसे, मैं अभी दिल्ली में हूँ, कि आप अपने घर से निकल जाइए, आप सेफ नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएँगे अचानक से? वो भी रातों-रात आपसे कह दिया जाए, रात को 2 बजे आके पुलिस आ जाए और आर्मी आ जाए, चलिए गाड़ी में बैठिए। उनको आज आज भी अपने घर नहीं वापस भेज पा रही है सरकार। तो ये किस तरीके की सिक्योरिटी है? किस तरीके का इंटेलिजेंस है सरकार का ये? आप सोचिए याकूब, आपने एक इमोशनल मुद्दा छेड़ा है, और हर बार मैं मणिपुर से वापस आता हूँ याकूब, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि ये जो जनरेशन है, ये बच्चे जो है, इनका भविष्य क्या है, इनके भविष्य क्या है। और ये सवाल मैंने बहुत बार पूछा, स्टोरी में भी पूछा, कि हमारे भगवान को घर मिल गया, मंदिर बन गया, इन बच्चों को अपने घर का वापस मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल किया, बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी चीज कही, और मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, बचपन से हमें सिखाया गया कि बच्चों में भगवान दिखता है, और आज हमारे भगवान, वो छोटे छोटे भगवान, एक रिलीफ कैंप में है। हम लोग सब घर में हैं, सारे मंत्री लोग घर में हैं, राष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री का भी घर है, गृह मंत्री का भी घर है, राज्य के मुख्यमंत्री का भी घर है, मेरा भी घर है, आपका भी घर है, उन बच्चों का नहीं है। एक लाइन में जवाब दूँगा तमिल, बस सिर्फ। आपने कहा मंदिर बन गया है, लेकिन उन बच्चों का क्या? क्योंकि मंदिर मणिपुर में मुद्दा नहीं है ना, इसलिए बच्चे आज वहाँ परेशान हैं। अगर मंदिर मणिपुर में मुद्दा होता, तो शायद बच्चों का भी एक घर होता। पहले याकूब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने देखा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दोज रिपोर्ट्स टू लाइट, बिकॉज दीज स्टोरीज आर नीडेड टू बी टोल्ड, and this cannot be an empty battle by one or two. We all have to fight this battle for our country, because Manipur belongs to our country. Thank you so much, Yakub, for your time. I'll let you go. Thank you for inviting me. But the show continues. The show continues because here's another aspect of this very discourse. We have seen the silence. We have seen the silence on part of the central government. Not a single tweet from the Prime Minister, not a single tweet from the President of the country, not a single tweet from the Union Home Minister, not a single tweet from any other leaders, not a single tweet from the Child and the Women Welfare Minister, not a single tweet from any commission. Forget taking any standpoint, urging people for peace. And we have no idea why that has not happened. There could be lot of discussions, there could be lot of criticisms, but it still intrigues the entire country. Why this silence? And here, let's juxtapose one thing. You know, in the state of West Bengal, there has been a major incident in Sandesh Khali. And you should have seen the alacrity on part of mainstream media
discussing Sandesh Khali, criticizing the state government, and they all should. They all should. If there is an incident, it should be discussed, it should be told without any fear or favor. Even I went to Sandesh Khali. Even I have reported from Sandesh Khali. But BJP had sent a fact-finding team to Sandesh Khali. BJP has sent a fact-finding team to Sandesh Khali. Please ask Bharatiya Janata Party how many fact-finding teams they had sent to Manipur. I am simply asking. They are there in power in Manipur. Would have been much easy for them, because here in Sandesh Khali, those visuals that you see, BJP's fact-finding team, they were not allowed to go inside Sandesh Khali. The state administration did not allow them to go inside Sandesh Khali, and BJP had called it nothing but absolute quote-unquote anarchy. BJP has condemned this, this attempt to stop them from going inside Sandesh Khali, and said this is high-handedness of Mamata Banerjee government trying to quell the voice of opposition. All that BJP had been saying. For BJP, sending a fact-finding team to Manipur would have been much easier. You have your own government. Nobody would have stopped you. Why didn't you? Why haven't you? You want to troll me? Troll me. You want to call me names? Call me names. But I will still ask you this question. I am not trying to underplay what happened in Sandesh Khali. Absolutely not. You know how you have tried underplaying Manipur? When you tried questioning people, one who had raised voice for Manipur, why are they silent on Sandesh Khali? What kind of comparison is that? So a crime has to be compared with another crime. Otherwise, the intensity of the crime cannot be justified. The gravity of the crime cannot be justified. And only when you compare Manipur with Sandesh Khali or Sandesh Khali with Manipur, Sandesh Khali becomes important. No. Sandesh Khali as a story also needs to be told. Sandesh Khali as a matter should also be investigated. Sandesh Khali as a matter should also compel us to ask questions to the high and mighty and to the power. And you are doing it rightfully. I was watching some debate last night on our TV, and one news anchor was about to cry. महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. अरे भाई, मणिपुर में भी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है. क्यों नहीं आवाज उठाते हो आप मणिपुर के लिए? आप संदेश खाली के लिए आवाज उठाओ, प्लीज उठाओ. मणिपुर के लिए भी उठाओ, प्लीज. मणिपुर इस देश का हिस्सा है. ये हमारे देश के लोग हैं. और जितने सारे लोग मर गए वो सिर्फ एक गिनती नहीं थे, वो भी एक परिवार से बिलोंग करते थे. आज उन परिवारों का क्या हुआ है? ना पूछे आपसे सवाल. ये सवाल आपसे पूछ ली तो मैं एंटी नेशनल. ये सवाल अगर पूछ ले तो मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं. अब संदेश खाली में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज सकते हैं, मणिपुर में नहीं. अब संदेश खाली के साथ मणिपुर का कंपैरिजन किया ना, मैं दिखा दूं. मैं बोलता नहीं. जिस लैंग्वेज में लोग पर्सनल मैसेजेस में ऑन ट्विटर, दे लिटरली हिट आउट एट मी एट टाइम्स. The kind of language they use to express their anger, I don't mind. It's their democratic right. Abuse me as much as you want. But how many times have you raised your voice expressing concern for Manipur? And why only Manipur? Raise your voice for everything. Because it is the job of media to hold the high and mighty accountable, to hold power accountable. NCW team came to Manipur, came down to West Bengal, went to Sandesh Khali. Very good. Very good. Did NCW go to Manipur?
They had sought report. But did NCW team go to Manipur? And you know why I'm stressing on this? Did they go? Did they go or not go? Did they go? Because every time you visit, you earn the confidence of people. Why do you think I have had access in all sides of Manipur? Because I've gone to Manipur so many times, people trust me. They don't see me as an enemy. So in order to build confidence, you have to invest your effort. In order to win the trust of Manipur, you have to talk about Manipur. You have to tell people as what you think about Manipur. They are holding protest in Kolkata. They are holding protest in Sandesh Khali. They are holding protest in Boshirhat against Mamata Banerjee government over Sandesh Khali issue. That's the job of the opposition party. They must do. Raise their voice against the ruling party. Do it. But show me one BJP MP. Show me one BJP MP who has expressed concern for Manipur publicly and has publicly urged upon the government to take some corrective measures apart from Prime Minister and Home Minister. They have spoken very briefly, but they have. Union Home Minister did go and stay there in Imphal for 3 days. He tried, and I totally get it. Manipur is a complex subject now. Manipur is a complex subject now. There are several layers intertwined. We do get it. There is one layer called geopolitics. We do get it. We do understand there are certain geopolitical concerns that the government of the day cannot publicly speak about. We do understand. And I am absolutely with the government in their effort to establish peace and harmony in Manipur. But then the famous saying is, justice is being done and justice is seen to be done are two different things. I repeat, justice is being done and justice is seen to be done are two different things. I humbly appeal to the people of Manipur. This mindless violence has to come to an end. And it will come to an end. I've been saying this from day one. No one can live with violence forever. This will come to an end. But think about the loss that we as a nation we have had suffered for the violence not having stopped by now. And when I talk about nation, it's you and me. The pain of the family, of those two families who have lost their loved ones yesterday, that pain is equally ours, mine, yours, everyone's. Human suffering has got no name of religion. And this violence has to come to an end. We only hope and pray there's something called confidence building measures. Because at this point in time, in this atmosphere of distrust which is prevailing in Manipur, the first thing and the most important thing that has to be done is to win the trust of the people, to earn the confidence of the people, and only government can decide how they want to do it. They want to fix on interlocutors, it's their call. They want to use some other measures, it's their call. But I'm simply appealing before the government, this has to be done. And I'm completely with my government. My government. The government of the day of my country is my government equally. Manipur's government equally. Bengal's government equally. Karnataka's government equally. Jammu Kashmir's government equally. And Uttar Pradesh's government equally. The government of the whole country. It is not about making a comparison between Manipur and Sandesh Khali to stoke in some political debate. No. It's only an appeal for the right intervention of idea, for equal justice,
an equal fight for justice. And finally, by the way, BJP had been shouting against Mamata Banerjee's government, right? That the fact-finding team had been stopped. You remember the name Annie Raja? She had gone to Manipur with her team. And representing National Federation of Indian Women, Annie Raja, Nisa Sidhu and Diksha Divedi, I had met them. They had gone to Manipur, they had travelled extensively. They had gone there as a fact-finding team. You know what Manipur police did thereafter? Booked them under sedition. Fact-finding team. Finally, I want to leave you with this small excerpt of a video of a story that I have done a couple of months back from Manipur, from somewhere in Churachandpur. Young people undergoing training, aspiring to become village volunteers. And when I asked you this question as whether you would call them militants tomorrow, think before you call them militants. Really. I'm not trying to prejudice your ideas, not trying to insinuate anything. Law is law. Law is sacrosanct. But emotion works differently at times. When I met them, and when I was doing this story, I found a bunch of them who aspired to join Indian Army, but they have ended up there, undergoing a training to become a village volunteer. As I say good night to you, and as I say goodbye to you, I leave you with this video, this small excerpt, because I want all of us to think. I want all of us to think. Unless we all unitedly try, this possibly will never come to an end. And where things stand today is the future of the children which is at stake. Future of the children of our country at stake. Leaving you with the excerpt of this report. Link of the report will be pinned somewhere in the comment section of this live broadcast. Thank you for watching. Thanks for all your support. Army. All of you. Sir. You wanted to be with the Indian Army Armed Forces. Yes, sir. How old are you? I'm 20. So why do you want to join Indian Army? To serve my country and Okay. my nation and my people and my lands. And after this, will you be still hoping and trying to join Indian Army? Yes, sir. Huh? Yes, sir. I'll still try for it. Okay. And you want to join Indian Army? Yes, sir. Okay. Well, you know the Indian Army training is very, very difficult. Do you find this training that you're going through as similar to what you have been told or what you have seen? Yes, sir. Okay. But this training is not as hard as losing Arden. That's why this training is not that difficult. Somebody tells me that, I want to join Indian Army. I really feel very proud. So why do you want to join Indian Army? To serve my nation, because I love my country. Since when have you thought of becoming, wearing that uniform or join the forces? It's been a dream since childhood, but it's shameful that we are training before the age that we can join the army, but it's all because of the conflict in Manipur, and it's for a teenager, 17, and with training with arms, it's not nice, but we need to